So in last class, we discussed about the refractive index, that how can you calculate the refractive index of any material, or refractive index means that how light is going to be bent, or with what value light is going to be bent into that medium, right? ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था. Yes. ओके. और इसमें हमने फॉर्मूला भी लिखा था, n इज इक्वल्स, n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? और लेट्स Yes. सपोज if there is no angle of incidence and no angle of refraction given there in the question, so you can calculate this with the help of another formula, which is equals to n is equals to c over v, and c is the speed of light. You can say that c is the speed of light in air divided by speed of light in the given medium, right? Yes. तो क्या डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में? ये सेम होगी. स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो जब लाइट एयर से मीडियम में ट्रैवल करेगी तो क्या स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस आएगा या सेम रहेगी? Yes. आएगा. इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? Decrease. डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने जब डेविएट होगा लाइट वहां पर रे, सो व्हेन लाइट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्ट और बेंट in some other direction, so light will take more time to travel from one end to another, so that's why speed of light in that medium is going to be slow as compared to the speed of light in air, right? Yes. और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है रियल और एपरेंट डेप्थ का, ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर Yes. लिखवा देता हूँ ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, real and apparent depth. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया आपने? Yes, वो भी अभी कर लिया था. ठीक है. तो रियल और एपरेंट डेप्थ में आपके पास डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मली अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो कि एक वाटर टैंक में इस वाटर टैंक में आपके पास टोटली वाटर को फिल किया जाए अगर, और यहाँ पर आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो इस टैंक में, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? लेट्स सपोज इफ देयर is an object which is placed in this container, अगर एक नॉर्मल आपने स्टिक को यहाँ पर प्लेस किया जो कि अभी सरफेस के ऊपर हमें नॉर्मल नजर आ रही है, सो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट स्टिक इन द डीप वाटर और इन द वाटर टैंक? It स्ट्रेट will आपको, be bent. yes, it will bend because there is a change in medium, so that object is going to be bent in other direction, so the Yes. final observation will be, so there is a bend in that medium or in the water medium, so actually आपके पास जो रियल इसकी डेप्थ होगी वो तो ये बेस के साथ टच हो रहा है, ठीक है, स्टिक Yes. जो है वो बेस के साथ आपके पास अटैच्ड है नॉर्मल अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि हम वहां पर उसे ऑब्जर्व उस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन नजर आएगी वो स्टिक का थोड़ा सा डिस्टेंस आपको हाइट पे नजर आएगा, राइट?
Yes. सो इसमें अगर आपने रियल और एपेरेंट डेप्थ को मेजर करना हो तो रियल डेप्थ कौन सी होगी? ये रियल डेप्थ है जो कि बेस के साथ टच हो गई यहाँ पर। सो दिस विल बी द रियल डेप्थ, but according to our observation, we are observing the image of that object somewhere at this point. So this will become apparent depth, right? Yes. So if you want to calculate the refractive index of this medium or the water, so what will be the formula to calculate refractive index? N is equals to real depth divided by, Refracted and yes, apparent refracted यानी depth. apparent depth. Yes. So you can calculate refractive index in three different ways depending upon the situation of the question. So आपके पास कोई भी situation हो, आपके पास तीनों तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर देख ली कि हम तीनों तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी डेप्थ को मेजर करें तो एपरेंट डेप्थ हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू द रियल डेप्थ, राइट? Yes. So real depth will be greater than the apparent depth, and the ratio between these two values will give the value of refractive index. Let's suppose that if apparent depth is equals to 6 centimeter and the real depth is equals to 8 centimeter, so there is a difference in the depth of that object and the image of that object, right? Yes. Okay, so this is another formula to calculate the real and apparent depth or to calculate the refractive index, right? Yes. Now, if we discuss about the phenomena of total internal reflection, so what is total internal reflection? When light is going to be reflect in single medium, let's suppose light is passing from glass or water, and light will completely reflect back into the same medium, right? Yes. So क्या रियल लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल है या सिर्फ हम इसे थ्योरेटिकल ही प्रूफ कर सकते हैं? एनी आइडिया? No. प्रैक्टिकली कहीं पे देखा है और प्रैक्टिकल इसकी कोई एग्जांपल या एप्लीकेशन जो आपने डिस्कस की हो? ओके, अगर प्रैक्टिकली नहीं देखा नहीं. तो मैं प्रैक्टिकली भी आपको पहले दिखा देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसमें मेन आपके पास फंक्शन क्या होता है जिसकी वजह से लाइट जो है वो कम्प्लीटली बेंड हो जाती है, राइट? Yes. So let's suppose if there is an example of total internal reflection. Okay, in this video you will observe the practical demonstration of total internal reflection, that how light can reflect back into the same medium after passing through that medium, right? और ये जो लैंप आपके सामने वीडियो में, इस लैंप Yes. को आपने काफी जगह पर ऑब्जर्व किया होगा. सो दिस एप्लीकेशन is also based on total internal reflection, right? Yes. So in this application you can observe that light is passing from dense to rare, right? This glass is a dense Yes. medium and light needs to be travel from dense to rare medium, which is air. But in this situation light is only reflecting back into the same medium, right? लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, वो कंप्लीट अगर आप उसकी रेस को ऑब्जर्व करो
तो light is completely reflecting back into the same medium, right? Yes. और इसकी हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं। यहाँ तो एक यूनिफॉर्म शेप था, अगर कोई इरेगुलर शेप हो, so this is regular surface, and if we consider some irregular shape, let's suppose this one, इसमें राउंड भी है आपके पास और एक कर्व पोल के थ्रू भी लाइट पास हो रही है। तो इसकी आपकी क्लियर ऑब्जर्वेशन आपके पास ये कि लाइट ने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैवल करना और फाइनल आपको यहाँ पे वो ब्राइट लाइट नजर आ रही है, राइट? Which means that light Yes. is completely reflecting into the same medium, right? और जो Yes. डेली लाइफ की एग्जांपल को अगर हम कंसिडर करें, तो डेली लाइफ में जो हम नॉर्मल इंटरनेट केबल्स यूज करते हैं विच इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? तो वो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होती है डेली लाइफ में। अभी जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पर, ये ऑप्टिकल फाइबर। So light is going to be travel from one end and you can observe light on the other end of that wire, right? Yes. So this is the application of total internal reflection, right? Yes. और इसके अलावा अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहो, ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हमने डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट लाइट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। So the main topic is total internal reflection. Total internal reflection. So in total internal reflection, when light starts moving from dense material, when light ray pass through dense medium, it will reflect back into the same medium. So this phenomena is known as total internal reflection. So the first condition for total internal reflection is that light must travel from dense to rare medium, right? And Yes. for second condition for total internal reflection, we need to discuss about the angles, that at which angle light is going to be reflect or at which angle light is going to be refract, right? Yes. So let's suppose if there is a dense and rare medium, so according to our condition, light must travel from dense to rare medium. So the bottom end is made up of dense medium and the upper part is of rare medium, that is of air. So light is going to travel from dense to rare medium, right? And to measure Yes. the angle, we first need a normal line which is always perpendicular to the surface or the medium. So this is our normal line which is always perpendicular to the medium. और इन तीनों कंडीशंस में हमने ये चेक करना है कि लाइट किस तरह से बिहेव करेगी जब वो डेंस से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है। So let's suppose in first situation,
is the angle of incident when incident ray is passing through dense medium. This is the angle of incidence, right? What will be the Yes. direction of wave after passing from dense to rare? Will it bend towards normal or away from normal? Towards normal. Okay, towards normal. Are you sure about that? Yes. क्योंकि ये टॉपिक हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है और इसके बारे में अब मिस्टेक नहीं करना आपने कि अवे फ्रॉम नॉर्मल है या टुवर्ड्स नॉर्मल. So light will move away from normal. So after passing through the medium, light will bend away from normal. So this is angle of refraction, right? Yes. So in this condition, angle of incidence is less than angle of refraction, right? Yes. So we can write that the angle of incidence is less than angle of refraction, right? And after increasing the angle of incidence, अगर हम angle of incidence को और increase करते हैं previous condition के according, so now this is our new angle of incidence. So at certain angle in every medium or in every dense medium, light is going to bend at 90 degrees, right? Yes. तो एक सर्टेन एंगल पर आकर हर डेंस मीडियम में लाइट जो है वो 90 डिग्रीज पर बेंड हो जाएगी, राइट? और इस सिचुएशन में Yes. आप ये लिख सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपके पास, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम उसे नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे एंगल, क्रिटिकल एंगल, राइट? सो दिस सी मीन्स क्रिटिकल एंगल. So when light is going to be refract at 90 degrees, so your angle of incidence will become critical angle. And if you further increase the angle of incidence, let's suppose if we further increase this angle of incidence as compared to the second diagram, so light will completely reflect back, right? And what will be the angle of reflection? Can you identify the angle of reflection? It will be equal to the angle of incidence. Yes, it will equal to the angle of incidence because according to law of reflection, angle of incidence will always equal to angle of reflection. और critical angle से कैसे compare करेंगे? Angle of incidence will be less or greater than critical angle? Lesser. Less तो लेकिन वो Oh पहली no, कंडीशन होगा, greater होगा, greater. greater than critical angle. So this is the third part or the third situation. This is the second and this is first. So in first condition, there is normal refraction process, and in second condition, light is refracting at 90 degrees, right? And at that point, incident angle is known as critical angle. And in the final situation, light is going to be completely reflect, right? And at Yes. that point, angle of incidence will become greater than critical angle, right? Yes. And if you want to observe that practical example of this experiment, total internal reflection, so I will show you with the help of a video that how this actually happens. Yes, so in this video, you are going to observe the actual angles. This is our dense medium, which is made up of glass, right? And you can see that all angles are already mentioned. And in first part, when light is passing straight from the medium, so there is no refraction in light wave, right? Light is moving in the straight direction. Okay, when we start to increase angle,
So you can observe from this video that angle of incidence is at 10 degrees, right? If you want to mark angle of incidence, so angle of incidence at this point is equals to almost 10 degrees, right? And what will be the angle of refraction? So we are discussing about the angle of incidence and angle of refraction at this particular point. So you can see that the angle of incidence is equals to 10 degrees, right? And if we discuss about the angle of refraction, so angle of refraction is somewhere between 10 and 20 degrees, right? Yes. So the angle of refraction is equal to 15 degrees in the middle of 10 and 20 degrees, right? Yes. So this is the practical demonstration of refraction process also, because in refraction light is going to bend away from the normal. And if we continue increasing the speed, sorry, the angle of incident ray, so let's see what will happen next. So light continues to bend away from the normal. You can see that angle of incidence is at 20 and refraction is almost closer to 40. Now incidence is equals to 30, refraction almost cross 50. And at this particular point, you can see that some of light is now reflect back, right? कुछ लाइट रे यहाँ पर Yes. रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इस पोजीशन पर और कुछ अभी भी बेंड हो रही है, ठीक है। और अगर हम फर्दर अभी एंगल को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास जो लाइट है वो 90 डिग्रीज पर बेंड हो जाएगी, राइट। क्योंकि यहाँ Yes. से थोड़ा सा डिफरेंस ये क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में आपको एंगल दिखाने के लिए लाइट मीडियम को ग्लास मीडियम से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेयर Yes. मीडियम ऐड हो गया, जिसकी वजह से लाइट इतना प्रॉपर आपको रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही। अब इस सर्टेन एंगल पर आकर लाइट जो है वो 90 डिग्रीज पर बैंड हो रही है और सम लाइट पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। Yes. सो अब आप यहाँ पर अगर एंगल को मेजर करो तो वो ऑलमोस्ट 42 के अराउंड है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अराउंड 42 डिग्रीज, राइट। Yes. और क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम क्रिटिकल एंगल, राइट। और ये सब मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं कि ये मीडियम में आपके पास एंगल सेम हो। हर मीडियम की अपनी एक वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की, जिसपे वो लाइट को 90 डिग्रीज पर बेंड कर सकता है, राइट। So in this particular medium, 42 almost is the critical angle. And if we continue to increase the angle of incidence, so you can see that now light is completely reflecting back into the same medium, right? Yes. So this process is known as total internal reflection because now no light is bending or passing towards rear medium. So this is the practical demonstration of total internal reflection, right? Yes. Any confusion? No. Okay. So we observe the practical demonstration of total internal reflection. And if we discuss about the real life applications of total internal reflection, so what are the applications? Anyone? Any application of daily life? अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें इसमें, तो हमारे पास एक एग्जांपल हम पेरिस्कोप की यूज करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पेरिस्कोप में क्या होता है, उसमें हम एक कंटेनर टाइप बनाते हैं
और उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। हेलो। यस। सो पेरिस्कोप में आपके पास, अगर हम यहाँ पे मिरर्स को सेट करते हैं, लेट्स सपोज मिरर इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट and the second mirror is placed at this point, right? So these are two Yeah. mirrors, and if you want to observe or reflect the light from an object which is placed somewhere at this point, so this is our object, right? Yes. And when light enters into the periscope after reflecting from this object, so light will reflect in downward direction, right? And then Yes. towards the observer, which is I, right? So in this Yes. process, periscope जो है वो old मतलब टाइम में लोग डिटेक्टिव के तौर पे भी यूज करते थे। सो अभी भी हम उसे बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और टू सी दी ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। अगर आप वॉल के थ्रू देखना चाह रहे हो तो आप पेरिस्कोप वहां पर फिक्स कर सकते हो, तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, क्योंकि अब तो सीसीटीवी कैमराज आ गए, तो हमें पेरिस्कोप की नीड नहीं है। हम कैमरा फिक्स करके बहुत वाइड एंगल को क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, हमें मिरर्स में देखने की जरूरत नहीं है, राइट? Yes. और अगर हम इसकी मेडिकल फील्ड की एक एग्जांपल को डिस्कस करें, सो देयर इज एन अदर एग्जांपल और एप्लीकेशन of total internal reflection which is known as endoscope, right? और एंडोस्कोप में आपके पास ऐसा क्या डिफरेंस होता है, या उसे आप किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यूज कर सकते हो? एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है एंडोस्कोपी, ठीक है, तो उसी के लिए हम ये एंडोस्कोप यूज करते हैं। और वो एंडोस्कोप नॉर्मली इसलिए यूज किया जाता है कि हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व कर सकें, राइट? Yes. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक एंडोस्कोप की अब तो काफ़ी एडवांस आ चुकी है, वरना पहले ये होता था एक हैवी बॉक्स टाइप मशीन होती है और उसके थ्रू एक केबल पास हो रही होगी, और उस केबल में जो है वो आपके पास कैमरा फिक्स होता है, और वो हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू नोज और थ्रू माउथ जो है हम इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखो Yes. तो ये आपके पास ऑर्गन्स की इमेज हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि एक ट्यूब के थ्रू, यहाँ इस ट्यूब के थ्रू कैमरा कनेक्ट करके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट? Yes. So this is another practical application of total internal reflection in the form of endoscope, right? Yes. और इस प्रोसेस को आप मेडिकल टर्म्स में एंडोस्कोपी कहते हो, राइट? Yes. एंडोस्कोपी। सो मेडिकल टर्म में अगर वो आपसे एप्लीकेशन पूछे तो आप एंडोस्कोप की लिख सकते हो, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पेरिस्कोप में आप जो है वो रिफ्लेक्शन मेथड से, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स आप जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? Yes. तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होगा, उसकी एप्लीकेशंस के साथ और उसके ऑल फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करता है। सिर्फ एक चीज यहाँ पर रह गई, हमने इसकी कंडीशंस ऊपर लिखनी थी दो। फर्स्ट कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली थी, अगर आप इसकी कंडीशंस लिखते हो, दैट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
So you need to remember those two conditions for total internal reflection. The first one is light must travel from dense to rare or rare to dense medium. Rare to dense. Rare to dense. Sorry, dense to rare. अभी भी सोच लो, रेयर टू डेंस भी हो सकता है। वो 2 बार मैंने रेयर लिख दिया। फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, और डेंस टू रेयर मीडियम मूव करवाने का रीजन ये है क्योंकि जब हम डेंस टू रेयर मूव करवाते हैं तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। अगर हम रेयर टू Yes. डेंस लेकर आएंगे तो लाइट विल मूव और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो उसमें आपको बहुत एंगल इंक्रीज करके आप 360 के ऊपर चले जाओगे, 180 से ऊपर, तो आपकी साइड चेंज हो जाएगी। तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। Yes. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन, एनी गेस? अभी तो पढ़ा है आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए? Lesser लेस देन किसके? अभी देखो angle of हमने यहाँ पर देखो जो थर्ड कंडीशन थी, refraction. अभी Yes. हाँ वो तो फर्स्ट कंडीशन थी, इंसिडेंस लेस होता है रिफ्रैक्शन से, लेकिन 90 डिग्रीज पर बेंड हो गया, क्रिटिकल एंगल बन गया, और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ, ठीक है, तो वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, राइट। Yes. So this is our second condition, that angle of incidence must be greater than critical angle, right? Yes. Greater than critical angle. So this is the second condition for total internal reflection. And if you want to write second point in angle of incidence must be greater than critical angle, right? Yes. And if you want to write term or definition for critical angle, सो बेसिकली क्रिटिकल एंगल आपके पास कोई नया एंगल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो वी कैन राइट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which light will refract or bend or refract at how much degrees? 90. At 90 degrees. So at that particular point, angle of incidence will be known as angle of critical angle, or you can say that critical angle is such that in which angle of incidence will become is equals to critical angle when light refracts at 90 degree or bent at 90 degrees after passing from dense to rare material, right? Yes.